This is frame of reference part 2. We are continuing with velocity transformation. Now we written like this: I dash dx dash upon dt plus this part j dash jy dash upon et plus इसका ये पार्ट k dash kz by dt प्लस बाकी अब दिस पार्ट एक्स कैप यूनिट वेक्टर डिफरेंशिएशन वाई डैश यूनिट वेक्टर जे डिफरेंशिएशन डी टी प्लस डी जे here we written this part be like this: r dash d upon dt plus this written seems I dash upon dt plus z dash dk upon dt. Now we know actually the velocity vector is angular vector is defined like this: angular vector cross r vector. So velocity vector defined like this: angular vector. तो इसको this one angular vector this and r vector xi yj plus zk. So we written like this: dx upon dt i यहाँ से ओमेगा क्रॉस एक्स आई फॉर ओनली फर्स्ट पार्ट, और इसका फर्स्ट पार्ट वी रिटन लाइक दिस. सो हाँ कर रहा हूँ कुछ. सो फॉर ओनली यूनिट वेक्टर we written like this: d I cap upon dt equals to e cross I. Now replace I cap I equals to I dash और x equals to x dash और dx dash equals to di dash equals to di dash upon dt di. तो put in equation so we get the only a one part. So by solving the other two parts also, that and that one, it only a one part. By solving other two part, that and that one, so we get now put in equation this. इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो डी आर कैप अपॉन डी टी इक्वल्स टू डी आर डैश कैप अपॉन डी टी एंड अदर टू वन इज हेयर एक्स सेम डी आई अपॉन डी टी, और यहाँ पे डी आई अपॉन डी टी इक्वल्स टू दिस वन, और एक्स इक्वल्स टू तो हम वी कैन से डी आई अपॉन डी टी इक्वल्स टू ओमेगा आई. तो यहाँ पे ओमेगा
x also is there, x also is omega, x also is there across here, plus omega. We simply x with this side and this also I तो हम रिटर्न लिख सकते हैं this one cap plus omega cross z k cap. So we here we get upon dt plus omega cross xi plus yj plus zk to dr dash upon dt equals to dr upon dt plus v cross r, simply r vector. So we this one that we know r dash equals to r vector, r dash equals to r vector. So dr upon dt, it is in a frame S, static frame. This is a difference in static dt in rotating frame. This now progress rotating frame. तो इसको velocity in this formula of velocity, तो velocity in rotating frame we say v dash equals to v cross r. ये r है position vector, तो यहाँ simply v. So that is a velocity transformation for a static frame to rotating frame. Now for acceleration transformation, acceleration transformation. तो acceleration a vector a equals to dv upon dt. So for in static frame dv upon dt equals to rotating frame dv upon dt as frame और ये rotating frame equals to plus d cross, simple differentiate this in this equation, or we can say differentiate this and differentiative of this. So we get simple dv upon dt upon dt in rotating frame and v cross v. Put here v equals to v dash upon omega cross r, where r is a position vector of v is a velocity in s frame and v dash equals to velocity of particle in rotating frame observed in rotating frame. So now we get simply v dash upon v differentiative of vt upon va. यहाँ पे पुट, यहाँ v की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, दिस इक्वेशन. यहाँ ओमेगा इज अ कांस्टेंट वेक्टर प्लस v क्रॉस v. Simply differentiate this equation for a rotating frame. We written like v upon vt are rotating frame. So here we get differentiative identity is there. So first differentiation dv dash upon dt plus second first और second यार both two. तो if अब for अगर
For a w a constant vector or for non-constant vector, two cases are there. So we return it is also a variable. If it is not constant, so it is also a variable, and r also a variable. So there is a product rule. So first same, तो ओमेगा सेम क्रॉस डी आर अपॉन डी टी प्लस प्लस फर्स्ट सेम सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड सेम फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, बट इन प्रोडक्ट रूल बी रिटर्न डी ओमेगा अपॉन डी टी क्रॉस आर. The position are same, plus d cross r vector v vector. This also comes. dt dv dash upon dt प्लस ओमेगा क्रॉस, इसको हम सिंपली v लिख सकते हैं, एंड दिस वन इज dt अपॉन dt क्रॉस r on this v cross v cross v. Here v also is transform change, तो हम v को also हम रिटर्न लाइक अभी नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं. चलो, दिस वन अपॉन डी टी इक्वल्स टू v डैश अपॉन वेलोसिटी v डैश अपॉन v टी इक्वल्स टू v क्रॉस dv अपॉन dt dv upon dt वी दिस इज इन एस फ्रेम, रोटेटिंग फ्रेम, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एस आर फ्रेम में है ये, तो ये वेलोसिटी इन आर फ्रेम, तो वी क्रॉस वी डैश इसको हम वी डैश लिखेंगे माइनस प्लस ओमेगा टी अपॉन डी टी क्रॉस आर प्लस वी, इसको वी को हम चेंज करेंगे तो दिस वन चेंज इनटू वी डैश प्लस दिस आर. Now we get dv upon dt equals to dv dash upon dt plus omega cross v dash plus t upon dt cross r plus here we this and a other part is the cross r, this one. Now here we get
dv dash upon dt plus 2 omega cross v dash plus ये r लास्ट वन इज r प्लस dw upon dt क्रॉस r. तो this simple acceleration a in frame s in frame s this x a dash in frame rotating frame acceleration in rotating frame this one omega cross dash vector plus r omega cross r vector plus if angular velocity is constant, so the differentiation is equals to 0. In case of uniformly rotating frame, they become say 0, so last term becomes 0. But we are calculating for all frames, all rotating frame. तो यहाँ पे acceleration here 2 cross v dash is, तो हम now transform this one equals to a dash equals a माइनस के साइन के साथ आएगा ये v डैश कैप प्लस नहीं माइनस r डैश माइनस this one. तो here minus 2 cross this terms is called, ये जो टर्म है इसको कहते हैं कोलोइडल एक्सीलरेशन एक्चुअल दिस इज सूडो एक्सीलरेशन. मतलब when a rotating frame it occurs due to rotating frame, not in actually जब हम किसी भी जैसे एक सपोज कर लो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, अगर हम इसको रोटेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम सिस्टम, तो ये इसके पार्टिकल के ऊपर एक एक्सीलरेशन होगा, कोलोइडल एक्सीलरेशन जिसको कहेंगे, जिसका टर्म्स हम इस टर्म में निकालते हैं. तो ये रोटेटिंग फ्रेम के लिए एक्सीलरेशन है. और यहाँ पे वेलोसिटी बोथ आर द वेलोसिटी एंड ये डिपेंड्स ऑन एंगुलर वेलोसिटी एंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन फ्रेम v डैश. इन फ्रेम रोटेटिंग फ्रेम में जो वेलोसिटी है उसके प्रोपोर्शनल होगा. एंड हेयर माइनस क्रॉस ओमेगा r is called centrifugal acceleration. Centrifugal acceleration centrifugal acceleration. It is in rotating in static फ्रेम. जब वो स्टैटिक फ्रेम में होगा, आर जो है पोजीशन वेक्टर जो होता है वो स्टैटिक फ्रेम में होता है. तो यहाँ ये डिपेंड करेगा स्टैटिक फ्रेम के लिए. ओमेगा इक्वल्स टू एंगुलर वेलोसिटी. दिस पार्ट इज लाइक दिस. सो एंड द लास्ट टर्म is minus d upon d omega upon dt cross r. It's known as Euclidean acceleration, where dy upon d is rate of change of angular velocity, or we can say angular acceleration also. Angular velocity, so we can say angular acceleration. So now for force transformation, तो F इक्वल्स टू ma
that simple. So therefore m dash vector equals to m a multiplied by in this equation this equation also multiply by m to where not acceleration in acceleration in rotating frame and a static frame a dash rotating frame and static frame minus 2 m w cross velocity in rotating frame v dash minus w cross w r वेक्टर प्लस इसके साथ भी m आएगा माइनस m डी अपॉन डी टी क्रॉस r. तो दैट्स अ फोर्स, वी कैन से फोर्स f डैश और ये फोर्स f इन f डैश rotating force in force observed in rotating frame and force observed in static frame plus f naught, the summation of these forces where f naught equals to minus m omega cross v dash plus minus m cross omega cross r minus m cross r. This is a fictitious force. Fictitious forces is fictitious force. So the equation is, this is known as force transformation equation. That's over. Now we are some important. Suppose there is a rotating frame. There is a clockwise rotating. This is becomes like this and rotating like this. So we observe that this is clockwise. ये y axis, x axis, z axis. So this x axis like this and rotating like this. So z axis like this. This rotated into the into the plane. So we like this. So this is clockwise rotation. This one like this. Okay, then suppose a particle here moving with some velocity. Suppose a particle moving with some velocity तो moving with some velocity, तो जो rotating velocity is like this v dash. अगर v है तो v dash is like this and centrifugal force act on this in direction outward. So this one is m cross r and Coulom's force is like this. The both are perpendicular like this 2m cross v dash.
This force is act when when acceleration when system is rotating. Otherwise, no force like this acting on a particle in a static frame. If there is a 90 to m cross omega, this sin 90 equals to 1 to v dash, this for a maximum Collider's force. Some effect of this Collider's force, some effect of this Collider's force. The video lectures are time is too much, so we shall start with effect of Collider's force next video. Okay then, thank you.